Welcome to Bioratna. Those of you who are watching my video for the first time, let me introduce myself. I am Chandana Sengupta, having 18 plus years of teaching experience. I am honored to be recognized as Excellent Educationist by HRD Ministry, Govt of India. Few of my suggestions have been incorporated in Standard 11th and 12th NCERT Biology. Many of my students have taken admission in government medical colleges, and without fail every session I have given my 12th board toppers with 98 or 99 marks. My real introduction is that I love my subject and I love and care for my students. Throughout the lecture we will be discussing the MCQs based on the topic, and the answer to it will be discussed at the end of the video. I will also provide you the PDF of the class notes which I provide to the students. It is so much popular with the students that they do not rely on anything else other than that even during the exams. But I always tell them there is no substitute for NCERT, and word by word reading of NCERT is must. But the notes will certainly help you. It is given in the description box. Please go through it. In today's video, we will be discussing the topic responses to abiotic factors from the chapter Organisms and Populations. No topic of this chapter, Organisms and Populations, can be understood by the students properly if their concept of what is population and what is ecosystem is not clear. In ecosystem only, both the biotic and the abiotic factors will be working together, and then we will see what response the living organisms they give to the abiotic factors. What is population? Please pay proper attention to it, everyone. This is the base of this whole chapter. What is population? So, we will see what is population. Suppose this is the area we have taken. For population, we need to mention three things: a given area, the species living there, and the time period. जैसे हम कहते हैं ना, human population of India in the year 2021, like that. तो हमने तीन चीजें mention की: human being, India, 2021. So this is the area, and in this area there is a species A. तो एक species है यहाँ पे, species A. एक दूसरा species है. There is another species. This is species B. And then there is still another species living over there. This is species C. In any area, there are so many species living there. प्लांट्स है इतने सारे हैं, एनिमल्स है इतने सारे, बहुत सारे स्पेसीज है वहां पे. द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज ए इन दिस गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम इज 4. यहाँ पे हमने 4 दिखाया है. सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज ए. Similarly, there will be different population of species B and then C, like that. अगर हम सारे जितने स्पेसीज यहाँ हैं सबका पॉपुलेशन ले लेते हैं, स्पेसीज ए बी सी इंक्लूडेड, देन इट इज कॉल्ड कम्युनिटी. तो इसके बाद आती है कम्युनिटी. प्लीज मार्क इट कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी दोनों में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. वी आर नॉट कंसिडरिंग द अबायोटिक फैक्टर्स. तो क्या ये स्टेबल पॉपुलेशन है? नहीं है. They cannot live without abiotic factors. बिना पानी, बिना हवा, बिना सॉइल, बिना लाइट, बिना टेम्परेचर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है. Then the next hierarchical level is ecosystem. What is ecosystem? ये सेम जगह है. पहले हम कंसिडर कर रहे थे सिर्फ the living organisms. Now when we consider together with the biotic factors the abiotic also, then we call it ecosystem. So this is the first
सस्टेनेबल यूनिट, दैट्स इट। क्या है पॉपुलेशन, क्या है कम्युनिटी, क्या है इकोसिस्टम, ये एक बेसिक होमवर्क पहले कर लीजिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। उस फाउंडेशन के ऊपर अपने नॉलेज को बेस कीजिए, you will be more confident. Before studying the different types of responses of different organisms to the abiotic factors, we will first discuss why the abiotic factors are so important and why the response of the organisms is that important. See, the outside environment, we have an internal environment inside our body. And we have to maintain a proper environment so as to carry out our all biochemical reactions and the physiological functions so that we are at our optimal best. But the outside environment is continuously changing, is variable. अभी बहुत गर्म है, अभी कंफर्टेबल है, अभी टेम्परेचर कंफर्टेबल है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया, कभी बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्म हो गई, like that. So naturally it is going to harm the organism. So you need to know here what is homeostasis. What is homeostasis? हमारे सारे बायोकेमिकल और ये जो फिजियोलॉजिकल सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों, तो उन्हें ठीक से वो अपनी बॉडी के अंदर हो, इसलिए दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर हम कहते हैं तो वो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहे और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सही रहे। So homeostasis is maintaining of constant internal environment in terms of temperature and osmotic concentration. Naturally the osmotic concentration is dependent on the control of water and salt. उसी से वो hypotonic, hypertonic बनते जाता है, and that very much affects the movement of the water in or out of the body, which affects the organism greatly. That you know about osmosis. अब आपकी NCERT आपसे एक क्वेश्चन पूछती है ये कि you know that there has been a continuous evolution. The organism has always tried to cope with the environment and find out ways so that it can adjust itself best to the environment. तो क्यों नहीं ऐसा होता है कि सबके पास ये पावर हो कि वो इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके, भले ही बाहर जो भी टेम्परेचर हो, भले बाहर जो भी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हो। एक एनालॉगस एग्जांपल भी वहां दिया हुआ है, नाइस एग्जांपल, कि अगर एक पर्सन बहुत कंफर्टेबल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ठंड में भले ही टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए और गर्मी में बहुत बढ़ जाए, still that person can maintain that 25 degree centigrade temperature at home, in his car, in his office with the help of an AC. ये क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है, किसी एनर्जी की जरूरत है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। वो पावर किन ऑर्गेनिज्म में है और किन ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो क्यों नहीं है। So now let us move to these questions and study the different types of responses of the organisms to the abiotic factors, starting with regulators. But before that, let us discuss some MCQs. So here comes your first MCQ. Who is the father of Indian ecology? Now you will say, we have studied about population, we have studied about why the response to external factors is so important, and why the MCQ is on father of Indian ecology. It is to make you understand, students, that it is very important to read scientist text at the beginning of the chapter and all the summaries at the end of the chapter too. Options here are Ramdev Mishra, P. Maheshwari, S.L. Mehta and M.S. Swaminathan. What is the correct answer? We will see at the end of the video.
Now the next is, what is a population? Four options are given. It is a group of individuals of all species of a given area in a given time. Second, group of individuals of a species in a given area in given time. Third, group of individuals of all species in a given area. And the fourth, the group of individuals of a species per area. That's it. You have to find out which option has gone wrong where, and accordingly you have to select the correct option. Okay, so now we start with the first response, that is the regulators. First response to regulate is regulate. They have these organisms have the controls in their hand. बाहर का environment abiotic factor जितना भी परेशान करे, they are able to maintain their homeostasis. That is the thermoregulation, the temperature of the body, and the osmotic concentration. For example, birds and mammals. The evolutionary biologists, they believe that the mammals are found everywhere. Na? In Antarctica, very cold also you will find them. In Sahara deserts, in equator, wherever you will find the mammals. It is because of this power to regulate. We will take the example of human being. Most of the mammals, they do the homeostasis like human being only. In human being, the body temperature is 37 degrees centigrade. When during summers, the temperature is very high, then they start to sweat profusely. तो जो ये पसीना आता है, then they sweat, it evaporates. And this evaporation of sweat brings down the temperature of the body. What happens during winter? During winter, when the temperature is very down, then they shiver. And the shivering is like an exercise which increases the body temperature. This is how they maintain their internal environment. यहाँ पे thermoregulation वाला NCERT में पढ़ाया है. This osmotic concentration भी बड़ा मजेदार है. जैसे गर्मी में आपने क्लास 11th में एक्सक्रीशन में पढ़ा है. गर्मी में जब बॉडी में पानी बहुत कम होता है, उस समय बॉडी क्या करती है, बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन को रिलीज करती है. कैसे? तो उसका जो डीसीटी पार्ट है, वो डीसीटी पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. हैव यू एवर नोटिस्ड कि ये जो डीसीटी पार्ट है ना, जैसे दिस इज द बाउमैन्स कैप्सूल, और यहाँ से होते हुए दिस इज पीसीटी एंड दिस हेनलेज लूप एंड देन दिस डीसीटी. हैव यू एवर नोटिस्ड कि यहाँ जो दिखाता है एब्जॉर्प्शन का एरो बाहर की तरफ होता है ना, कि ट्यूब्यूल से निकल रहा है बाहर. हियर अदर देन H2O, यहाँ पे सोडियम भी लिखा हुआ है. यहाँ पे सोडियम भी लिखा हुआ है. कैसे? अब गर्मी में उसे कम पानी एक्सक्रीट करना है, मतलब लॉजिकली उसे इस ट्यूब के अंदर से जो पानी एक्सक्रीट होने जा रहा है, यूरिन में जो पानी है, उसे एब्जॉर्ब करना है. सिर्फ सोचने से थोड़ी ना होता है कि करना है. आपको भी जैसे नीट क्रैक नहीं, आपको भी जैसे मेडिकल में एडमिशन लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसे भी कुछ करना पड़ेगा पानी एब्जॉर्प्शन के लिए. क्या करना पड़ेगा? पहले ये सोडियम को एब्जॉर्ब करता है. इसे कभी आपने ध्यान दिया? ये जो सोडियम है इसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो बाहर में हाइपरटोनिक हो गया. व्हेन इट बिकम्स हाइपरटोनिक, पानी तो अपने आप आ जाएगा ना अंदर, मेडिकल तो अपने आप क्रैक हो जाएगा ना आपका. सो दिस इज द थिंग अबाउट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कि फिजियोलॉजिकली वो ऑर्गेनिज्म कैसे इसे मेंटेन करता है. दिस इज हाउ द मैमल्स दे डू इट, and the plants, they do not have any such mechanism of homeostasis. Now we move to the next type of response, that is conform. To conform with the outside environment. So naturally these organisms we will call conformers. 99%
of all animals and almost all plants, they are conformers. They conform with the outside abiotic environment. Why so? When you can live pleasantly, if you are regulator, then why not do so? Because thermoregulation is a expensive process. Not many ATPs are required for that. You know that the mammals and birds, they are hot-blooded animals. They have four-chamber heart. They get oxygenated blood, more oxygen to break more glucose and more ATP. So why not everyone done that? Everyone is in different environment, different situation. They have to see the pros and cons, what to opt for, what not to opt for, and then take that direction. So everyone cannot do the same thing. So maximum organisms are conformers only. We will see why very small organisms like hummingbirds and shrews, they are not found in polar regions, very cold regions. The hummingbird and the shrew, why they are not found in very cold regions? The reason is that the heat loss is the function of surface area. इसका ये मतलब नहीं है कि जितना सरफेस एरिया है उतना हीट लॉस होता है. नो, इट इज द सरफेस एरिया रिलेटिव टू बॉडी वॉल्यूम. और जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है. सो द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दे टेंड टू लूज more heat, and then as thermoregulation is very expensive and they can't do that, so they simply do not live in the polar regions and they move to warmer place. This is all about the conformers. Then there are some organisms whose response is not simply regulate or simply conform. They are, for some period they are regulators, after which they are conformers. Let us draw the graph for that, which is very very important for your board, for your NEET, all exams. जब एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे ना, खुद की खुशी के लिए पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ जाओगे, बिना टेंशन के पढ़ जाओगे और डॉक्टर तो ऐसे ही देखते देखते बन जाओगे. चलो, महामंत्र था. अब देखो, this is the graph. This is the external environment or external level. This is the internal environment or internal level. Now, अगर ये external environment का temperature ऐसे बढ़ते जा रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, this is going on increasing, but then there are some organisms which you have studied already, the regulators, which can regulate, or if this is 37 degree temperature, so they will maintain this constant 37 degree temperature. भले बाहर का temperature इधर 5 हो, इधर 40 हो, इधर 45 हो, they are maintaining the 37 degree centigrade body temperature. So these are called regulators. This is regulator. Then there is another one, that is conformers, which conform. वो क्या करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है 5, 10, 15, 20, अकॉर्डिंगली उनका भी टेम्परेचर ऐसे बढ़ते जा रहा है. सो द हाउ द ग्राफ लुक्स, ये ग्राफ सीधे फिर इसका ऐसे ऐसे आते जाएगा. तो दिस ग्राफ, दिस टेक्स दिस टर्न, यहाँ का भी बढ़ रहा है, इनका भी बढ़ रहा है. सो दीज आर द कन्फर्मर्स. दिस इज सी. ऐसे डायग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए बच्चा ना, कि ऐसे जो सीधा रखा है मतलब उसमें कांस्टेंट रखा है, वो रेगुलेटर है. फिर जिसका बाहर का ऐसे बढ़ते जा रहा है तो उसका भी बढ़ते जा रहा है, वो कंफर्म कर रहा है. एंड देन देयर आर सम जो पार्शियल रेगुलेटर्स है, पार्शियल कंफर्मर्स है, उन्हें कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स. ये हुआ, वो दोनों शो कर रहे हैं, रेगुलेशन भी और कंफर्मेशन भी. So this is partial regulators. Now, if the stressful external environment
remains for a very short duration, then the response can be different. How? First is migrate. What is migration? This is a temporary travel, means the organisms, they leave their stressful habitat, जहाँ रहते हैं वहाँ का हैबिटेट, कोई ज़्यादा गर्मी हो गई है, ज़्यादा ठंड हो गई है, उसे वो छोड़ देते हैं and they move to some hospitable area. This is called migration. For example, you will find that in Colorado National Park, Bharatpur, Rajasthan. The Siberian cranes, they come from Siberia, they visit Bharatpur, they live here for their entire winter duration, और फिर वहाँ जब ठंड कम होती है तब वो वहाँ लौट जाते हैं. This is migration. Now the last one is suspend. What is suspend? अब जिसके पास एसी था उसने खुद को रेगुलेट कर लिया, बहुत सारा एटीपी है, खर्च करते चलो, मेंटेन करते चलो. Those who are not having, they were conformers. फिर माइग्रेट किसने किया? जिसके पास, अब माइग्रेट के लिए भी पैसे लगते हैं ना, बाहर जाना है, दिल्ली में बहुत गर्मी है, शिमला जाना है, रेगुलेट के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं. तो 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि बाद में अच्छे से एसी खरीद सके, रेगुलेट कर सके, सब चीजें, है ना. तो जिसके पास रेगुलेट करने की भी कैपेसिटी नहीं, माइग्रेट करने की भी कैपेसिटी नहीं, और द आउटर एनवायरनमेंट इज टू स्ट्रेसफुल, तो वो क्या करेगा? अब वो कहीं जा नहीं सकता है, रेगुलेट कर नहीं सकता है. Then also it has a mechanism by which it can survive through the unfavorable condition. It is different organisms are following it in different ways. First, spores. The bacteria, the fungi, the lower plants, what they do during unfavorable conditions, they form the spores, which are the structures having a protective covering, which survive the unfavorable condition, and in favorable condition it forms a new organism. This is one method. Second, in higher plants you will find that they have seeds and they have vegetative propagules. Vegetative propagules का मतलब समझ में आया? जैसे vegetative propagation you know ना, तो vegetative propagation मतलब फ्लावर के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, उसमें से किसी से अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करता है then it is vegetative propagation, और उन पार्ट्स को कहते हैं vegetative propagules. तो ये जो vegetative propagules है वो, जैसे आप in winters you will find the beautiful flowering plants, फिर वो पौधे सारे खत्म हो जाते हैं, विंटर खत्म, all plants gone. आपको लगा प्लांट्स खत्म हो गए, अगले साल फिर से वो विंटर में निकल आए. कहाँ से निकल आए? जमीन के नीचे उनका कुछ राइजोम, एनी प्रोपैगुल इज रिमेनिंग देयर इनसाइड द सॉइल. फिर उन्हें अपने हिसाब से ठंड मिल जाती है तो दे अगेन ग्रो. दिस इज वेजिटेटिव प्रोपैगुल्स. एंड द सीड्स, तो यू नो ऑल कि द सीड्स दे बिकम डॉर्मेंट, मेटाबॉलिक रेट वगैरह कम कर लेते हैं, एंड देन दे सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशन. जैसे फेवरेबल कंडीशन मिला देन दे जर्मिनेट to form the new plant. Then estivation. Estivation is a summer sleep. बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, क्या करना है? पूरे गर्मी में मेटाबॉलिक रेट कम कर लिया, रेस्पिरेशन रेट कम, हार्ट रेट कम, और सो गए पूरा. So this is found in some snails and fishes. During summer stress, to avoid the heat and desiccation, some organisms like snail and fishes, they undergo a period of summer sleep to avoid the stressful condition of summer. Next is hibernation, that is winter sleep. Those organisms for whom the winter is very stressful
there is too much of cold outside, then they also go a period of winter sleep, during which the metabolic rate is very slow. For example, beer. Then the last, that is diapause. Diapause is a period of suspended morphological development. Suspended morphological development shown by the zooplanktons found in lakes and ponds. So this is zooplankton. Now, do you remember what is zooplankton? Plankton means microscopic organisms which float passively with the water current. If they are animals, then they are called zooplanktons. If they are plants, then they are called phytoplanktons. So zooplankton in lakes and ponds during summer. So summer related stress को avoid करने के लिए वो क्या करते हैं, टू कोप करने के लिए, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, टू कोप इट दे सस्पेंड देयर मॉर्फोलॉजिकल ग्रोथ. उस समय कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी नहीं होती. दिस इज डायपॉज. दिस suspend one is very often asked question in your boards and NEET. So you have to remember, एकदम पक्के से दिमाग में डाल देना है कि एस्टिवेशन किस में था, स्नेल और फिशेज में था, डायपॉज किस में था, जूप्लैंक्टन में था, ताकि कुछ भी घुमा फिरा के दे तो आप इमीडिएट उस पर पॉइंट रख सको कि हाँ डायपॉज किसका है, ये एस्टिवेशन किसका है, स्पोर्स किस में बनते हैं, हाइबरनेशन किसका है. वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू. We have to see the MCQs now. Now answer these MCQs fast. This is the diagram. You can recognize it. Of these three, you have to recognize what is this 1, 2 and 3. The option given here are, I have written the short form, C for conformer, R for regulator, PR for partial regulator. And here you have to find the one which matches with this one. So which one is that? 1, don't look here in the answer. 1 is, it is the regulator. This one, 3, it is the conformer. And this one which is showing regulation as well as conformer, this is partial regulator. So your option is B. Done? How many of you could answer it properly? Okay, this is often asked one. Fine. Next is, from here also, from estimation, diapause, the MCQs are asked. Here I have taken from estimation. Estimation is shown by beer, zooplankton, snails and fishes, bacteria and fungi. So the answer is estimation is shown by snails and fishes. In the beginning we discussed some MCQs. The father of ecology is Ramdev Misra, not Mishra, it is Ramdev Misra, right? And the what is population? Population जहाँ पे आपको तीनों चीजें नहीं दिखेगी, it is the number of individuals of a species in a given area and in a given time. That one is selected. So students, here ends our this topic, responses to abiotic factor. I hope you have understood it well. If this video has helped you, then do subscribe. Click the bell icon so that you can go on getting my videos regularly.